Assalamu alaikum everyone. This is Khadija Shahzad, director Never Cease to Grow. I did a session on with the title Expand Your Scribble from the platform Methodologics ETS series, and there I promised my viewers that I am going to share the tutorial of the tools that that I actually showed them. However, Canva एंड Prezi का ट्यूटोरियल तो नहीं हो सकता, इसके पेड कोर्सेज होते हैं, बट दी अदर फोर टूल्स आई डिड प्रॉमिस कि वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ऑटो ड्रॉ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दी other tool which is Sketch Metadome Lab. ठीक है, सिंपल है. यू विल सर्च इट ऑन द गूगल, यू विल गेट इट विद द नेम एनिमेटेड ड्राइंग्स एंड यू विल सिंपली गो देयर. जब आप वहाँ पर जाएंगे यू कैन सी ऑल दी इंस्ट्रक्शंस राइट हियर कि आपको अपनी ड्राइंग को अपलोड करना है, उसको थोड़ा सा ट्वीक करना है एंड देयर यू विल बी रेडी फॉर एन एनिमेटेड ड्राइंग. ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को ड्राइंग और कंप्यूटर दोनों से इंट्रोड्यूस करवाने का एक अच्छे टूल से. सो लेट्स क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड लिंक. So here you can see on my left all the checklist is here. आप इसको रीड करें, इसमें सिंपल ये लिखा हुआ है, ये करेक्टर जो आप ड्रॉ करेंगे, जो भी स्टूडेंट ड्रॉ करेगा, इट शुड बी ऑन अ वाइट पीस ऑफ पेपर विदाउट लाइंस रिंकल्स और टीयर. ठीक है, बहुत ही प्लेन पेपर होना चाहिए जिस पे आप ड्राइंग करके उस ड्राइंग को आप स्कैन कर लेंगे. ठीक है, ड्राइंग में हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा clearly visible होने चाहिए in order to minimize the shadows because this is an AI tool, so you have to understand its limitations. ठीक है, and the last checklist that they've written is do not include any identifiable information, offensive content. ठीक है, so you have to make sure of all these things. They have also given some sample drawings जिस तरह की हो सकती हैं, और अगर आप चाहें तो आप ऑटो ड्रॉ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से मैंने ये बैलरीना ड्रॉ किया है एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस टुडे. ठीक है, तो सिंपल है. वी विल क्लिक ऑन द अपलोड फोटो ऑप्शन दैट वी हैव ऑन द बॉटम राइट. So I've clicked that. I'm going to select my file and the file is here. ठीक है, in case आपने upload किया and you don't like it, you can click on the retake button and redo the thing. Okay. So next करते हैं and let's tweak it according to the information. ठीक है, now here it's asking if you would like to help the research. If you do not like, you can click on disagree, but I do not mind, so I am clicking on agree. ठीक है. नेक्स्ट इज हियर वो आपको कह रहे हैं कि इसको आप थोड़ा सा ट्वीक कर दें. मैंने यू नीड टू minimize the area that is around her. Okay, so that is exactly what I'm doing. It's very simple, very easy. The students can do it and you can also do it for them if they are too young to do. Okay, once we are done, we are going to click next. So as soon as you click next, उन्होंने एक outline draw कर दी है and they have given a checklist कि the body parts of your character should be highlighted. अगर highlighted नहीं है then you can use this pen tool and highlight अगर कोई भी area ऐसा है जो highlight नहीं हुआ है. But हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं पूरा उसका जो outskirts है वो सारे उसके highlighted है. Okay, so let's click on the next button. हियर उन्होंने उसको आप देखें आईज को उन्होंने मार्क किया है, फेस को मार्क किया है, आर्म्स को मार्क किया है, लेग्स को. तो आर्म्स क्योंकि इसके और ऊपर हैं तो मैं इसे ड्रैग करके आई टेक इट टू द पॉइंट वेयर इट शुड बी. Okay, because it is not a perfect drawing, so we can expect some deviation from the original content. Face मैं इसका थोड़ा सा नीचे करूँगी because this is it is here. The eyes are almost non-visible, so I'm placing it down further. Okay, and the legs are twisted. तो फिर right को मैं left पे ले जाऊँगी और left को मैं right पे ले जाऊँगी because that is how it is. So that is how it needs to be. ठीक है, once all the tweaking is done, this is basically the knees. These are I think the beginning of the leg, which is perfect, and this is the body, which I think is okay. I do not want to change it. All right, so
Okay, no, I think these are not the arms जो मैं ऊपर ले गई हूँ. This is the shoulder if you look closely, and okay, let me see. नहीं, नहीं, these are the cheeks. It looks like these are the cheeks. Okay, so needs to go up. Yeah, ears होंगे. ठीक है, so it needs to go up. Then this is the shoulder. So I'm taking the shoulders up, and these are the hands. So it goes here, and this is the elbow. Okay, so this is the elbow. See, mistakes happens with everybody. It's so normal. Okay, and these are the thighs. So let the thighs go with the thigh, and knees are on the proper side. Now I think the figure looks perfect. So let's continue and click on the next button, and the figure has started to animate. Now you see, अब ये animate हो रहा है. So you can also have it change the animation. आपके पास बहुत सारे अब देखें उसकी आईज और वो हमने बहुत नीचे कर दी थी तो उसका सर नीचे चला गया है, राइट? सो you need to make changes accordingly, and once you are happy with the figure, that is why the hands and legs should be very clear. Okay, so anyways, no problem, this happens. So you can use a better picture and you can do. Okay, you can fix it also. We can click on the fix button, and we can take eyes and face a little higher. Maybe that will work. And let's click on the next button and see if it works. Oh no, it didn't. Anyways, so it's okay. You can keep on fixing. This is just a tutorial. See, the head is better. So we can make it a little more better. Okay. And once you are done, you can just click on the share button, and you can see, you can copy the link and you can share it. Okay. So there are many options here for sharing, and the children can play with it also. All right. It's a video. The downloading option is not yet available, but this is all that we have for today. So enjoy, and with that, the tutorial comes to an end. Allah Hafiz.